क्या क्या करते हैं अपन सर्विस में, क्या क्या कर सकते हैं। कॉमन फंक्शन यदि होगी तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और एपीआई कॉल फंक्शंस वापस एपीआई। सकते हैं। और अपन वेरिएबल में डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं, सर्विस में भी अपन वेरिएबल स्टोर कर क्रिएट कर सकते हैं, और वो वेरिएबल अपन कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। और भी है लेकिन वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब एक इजी टॉपिक बताता हूँ, पाइप। ओके। रन हुआ है तो एक्सेस करते हैं। अब देखो ये यूजर का डेटा है, और अपन ने इसी में दो अलग अलग डेटा दिखाए हैं। कार्स में देखते हैं। ठीक है। अब ये कार का डेटा है अपने पास, या फिर एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। वेरिएबल का कंपोनेंट था क्या अपने पास? हाँ। ठीक है, ये कंपोनेंट में मैं बताता हूँ। वेरिएबल का राउट नहीं बनाया, या फिर एडमिन। ठीक है, एडमिन कंपोनेंट यूज करते हैं। अब अपने पास डेटा टाइप कौन से हैं टाइपस्क्रिप्ट में? कौन से डेटा टाइप है अपने पास? स्ट्रिंग नंबर एनी हम्म। बुलियन। बुलियन। अब ये कितना याद होना चाहिए बताओ मेरे को, अपना एंगुलर बीच में आ गया है, अभी भी मैं अगर डेटा टाइप पूछता हूँ तो टाइम लगता है आप लोगों को। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, डेट, ये अपने चार प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब बेसिक डेटा टाइप बोलो। उसके बाद एनी, एनी अपना डायनामिक डेटा टाइप है। उस अगर एनी लिखा तो कोई भी टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। उसके बाद अरे और ऑब्जेक्ट, राइट, इतना तो बाय डिफॉल्ट पट से आना चाहिए। उसके बाद नल और अनडिफाइंड, ये दो एक्स्ट्रा है, वो नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, डेट, अरे और ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ओके। अब तो हमने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें क्या वैल्यू स्टोर की है? स्ट्रिंग टाइप ऑफ और चेतन स्टोर किया है। वैसे ही मैं लास्ट नेम क्रिएट करता हूँ, कोलन डेटा टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे स्मॉल में जोगी लिखता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास दो वेरिएबल है, फर्स्ट नेम में चेतन है, उसका सी कैपिटल है, और लास्ट नेम का जे स्मॉल है। ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे रो कॉलम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कॉल 3। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला वेरिएबल प्रिंट करता हूँ, साइड बाय साइड ओपन कर लेता है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल का नाम प्रिंट किया, उसके बाद इंटरपोलेशन में अपन ने डेटा प्रिंट किया। ठीक है। अब इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है? चेतन। तो देखो, सी कैपिटल के साथ प्रिंट हुई। बट लेट से मुझे जब मैं रेंडर कर रहा हूं, तब मुझे क्या करना है? वैल्यू, जो फर्स्ट, जो भी मेरे कैरेक्टर्स है, मतलब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो मुझे क्या करना है? स्मॉल केस में करना है, मतलब लोअर केस में करना है। ओके। तो उसके लिए मैं नीचे अभी पाइप बताता हूँ। सो फिर से लोअर केस। अब मैं फिर से इंटरपोलेशन यूज करूंगा, लेकिन इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मुझे क्या करना है? फॉर्मेट करना है। सो हमारा पाइप जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ डेटा फॉर्मेटिंग के लिए अपन यूज करते हैं, और वो भी कहाँ पे? एचटीएमएल में। पाइप ये कंसेप्ट किस लिए यूज करते हैं? मतलब एचटीएमएल में डेटा रेंडर होने से पहले अपन उसको फॉर्मेट करते हैं। तो अपन वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करते, बस यूआई में वैल्यू दिखने से पहले अपन उसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेट। सो पाइप का ये सिंबल है, बैक स्पेस के नीचे जो बटन है ना वो, शिफ्ट दबाओ और ये बटन दबाओ, खड़ी वाली लाइन। ओके। यहाँ पे अपने को क्या करना है? लोअर पाइप यूज करना है। सो लिखो डायरेक्टली लोअर केस। देखो सजेशन में आ रहा है लोअर केस। अभी अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखो, ये ओरिजिनल वैल्यू है मेरी, और ये लोअर केस पाइप के साथ, तो देखो ये सी स्मॉल हो गया। इसके लिए अपन ने कुछ कोड लिखा क्या कि वेरिएबल की वैल्यू का पहला पहला कैरेक्टर स्मॉल करो? नहीं, वो काम किसने किया? अपने लोअर केस पाइप ने। देखो अभी मैं रिमूव करता हूँ, तो पूरा जैसे का वैसा वैल्यू प्रिंट हुआ। ओके। तो ये लोअर केस। अब इसी के बाद मैं इसको अपर केस करके देखता हूँ। अपर केस, फिर से वेरिएबल अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपर केस। सो जैसा अपने को नाम सूझता है ना, वैसे ही पाइप के नेम है अपर केस। ठीक है। अब देखो इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो पूरी कैपिटल में प्रिंट हो गई। मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू में अपना सिर्फ पहला कैरेक्टर
कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था। लोअर केस पाइप यूज किया तो सारे कैरेक्टर स्मॉल में कर दिए, अपर केस यूज किया तो सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में कर दिए। गॉट इट? सो ये क्या हुआ, फॉर्मेटिंग। मतलब यूआई में डेटा दिखाने से पहले वो डेटा फॉर्मेट हो रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ पाइप है। सो एंगुलर ने कुछ डिफॉल्ट पाइप दिए हैं, कुछ अपन कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज अपन सब डिफॉल्ट पाइप देखेंगे, उसके बाद कल सुबह मैं कस्टम पाइप कैसे क्रिएट होता है या फिर थोड़े दिन बाद बताऊंगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ओके। सो ये अपना डिफॉल्ट पाइप है, पहला अपन ने लोअर केस अपर केस देखा। वैसे ही और एक पाइप है, फिर से बी आर टैग डालता हूं। अब ये जो वेरिएबल लास्ट नेम, अब मुझे बताओ, जैसे अपन नेम दिखाते हैं, लेट्स से फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो क्या फॉर्मेटिंग रहना चाहिए? अगर मैंने कहीं पे अपन फुल नेम प्रिंट कर रहे हैं तो नॉर्मली फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए? सारे लेटर स्मॉल में रहते हैं, सारे लेटर कैपिटल में रहते हैं, या और कुछ कैसा रहता है? कहीं पे भी अपन एप्लीकेशन में कहीं पे तुमने नाम देखा होता, कौन से फॉर्मेट में रहता है? फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल। हम्म। फर्स्ट लेटर इज ओनली कैपिटल, बाकी सब राइट। स्मॉल। फर्स्ट, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो उसको भी एक पाइप है अपने पास, दैट इज कॉल्ड टाइटल पाइप। ओके। तो टाइटल पाइप, इसमें मैं मेरा दूसरा वेरिएबल यूज करता हूँ लास्ट नेम, इसमें देखो जोगी स्मॉल में है, या फिर यहाँ पे पूरा कंप्लीट नाम लिखते हैं, चेतन प्रकाश जोगी। ठीक है। अब ये वेरिएबल मैं यहाँ पे देता हूँ, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि वैसे देख लो। ओके। अब इसको मैं टाइटल के पाइप यूज करता हूँ। सॉरी, टाइटल केस। ओके। देखो क्या किया उसने, मेरे वेरिएबल में जितने भी वर्ड्स थे, सब वर्ड के पहला कैरेक्टर उसने कैपिटलाइज कर दिया। अंडरस्टूड? टाइटल केस पाइप। अगर समझो, ये अगर अपने पास पाइप नहीं रहता था, और मैंने अगर बोला रहता कि अपने पास वेरिएबल में एक वैल्यू है, उस वेरिएबल में ऐसे 3 वर्ड है, और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, तो कैसा कोड लिखे रहते हैं? ये गूगल करके या चैट जीपीटी करके देखना। विदाउट यूजिंग पाइप, अगर अपने पास वेरिएबल में ऐसा फुल नेम है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करना है, तो इसका चैट जीपीटी को पूछ के देखो कि कैसा कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है, पहले अरे में कन्वर्ट करो, अरे में से हर एक एलिमेंट को उठाओ, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करो, डॉट टू अपर यूज करके, फिर नया स्ट्रिंग बनेगा। अब वही काम इस पाइप में ऑलरेडी जा एंगुलर ने लिख के रखा है। मतलब जो कस्टम कोड अपने को करना पड़ता था, वो यूजिंग पाइप हमने करना नहीं पड़ता अभी। गॉट इट? अब पाइप कितना हेल्पफुल है अपने लिए, समझ में आया? क्लियर है पाइप? सो ये सारे यस। लोअर केस अपर केस वाले हैं। अब दूसरा आता है डेट। ओके। तो डॉट कॉल 3, एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, करंट। करंट डेट कैसे लेते हैं अपन? मुझे चाहिए करंट डेट, कैसे लेते हैं? बोलो, करंट डेट कैसे लेते हैं अपन? मुझे करंट डेट चाहिए अभी की। न्यू डेट। न्यू डेट ना, सबका आंसर आना चाहिए। क्या यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कि क्या है? ओके, ये मेरा वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ मेरा वेरिएबल। तो देखो, जब मैं न्यू डेट करता हूँ तो मुझे कितना सारा डेटा मिलता है, डेट भी मिली, टाइम भी मिला, और टाइम जोन भी मिला। ओके। नॉर्मली अपन एपीआई कॉल भी करते हैं ना, तब एपीआई कॉल से जो डेटा आता है ना, ऐसे ही फॉर्मेट में आता है। बट इतना सारा डेटा दिखाएंगे क्या अपन, और यूजर को समझेगा क्या ये? जैसे अपन यूजर में गए, यहाँ पे कहीं पे डेट आ रही है क्या? अरे यार, डेट नहीं आ रही कहीं पे, ठीक है। एनजी फॉर्म में नहीं आ रही कहीं पे भी। ओके। लेट से तुम्हारा एपीआई कॉल किया तुमने, और एपीआई कॉल का डेटा बुलाया, और एपीआई कॉल में कोई तो भी फील्ड में डेट आ रही है। अगर डेट में इतनी बड़ी डेट है, यूजर को सही में इतनी बड़ी डेट दिखा के मतलब है क्या? नहीं ना, उसको सिर्फ डेट चाहिए, इतना भी दिख गया तो भी सफिशिएंट है। टाइम और ये टाइम जोन से यूजर का क्या लेना देना, बराबर? तो इस डेट को अपन फॉर्मेट कर सकते हैं, तो अपने पास डेट की भी कुछ पाइप्स है। ओके। तो देखो, अभी डेट के पाइप, अभी सिर्फ डेट पाइप बोल रहा हूँ मैं।
ये अपना वेरिएबल, उसके बाद पाइप का सिंबल लो और सिर्फ डेट डालो। डेट मतलब डेट पाइप है, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिनल वैल्यू है। देखो यूजिंग डेट पाइप उसने सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट किया, ये पूरे वेरिएबल के वैल्यू से उसने सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट किया, December 9, 2024। समझा? अपने वेरिएबल में इतना सब कुछ है, बट अपन ने अगर डेट पाइप लगाया था तो उसमें से उसने क्या किया, सिर्फ डेट निकाली, December 9, 2024। अब इस डेट को भी अपन फॉर्मेट कर सकते हैं बाय पासिंग द फॉर्मेट। कैसे फॉर्मेट में चाहिए वैसा। डेट, लेट से अपने को क्या चाहिए, डी चाहिए, चाहिए, वाई चाहिए, ये अपन फॉर्मेट भेज सकते हैं ऐसा। देखो कैसा होता है। करंट डेट, उसके बाद अपना डेट पाइप चलाओ, और डेट पाइप को तुम पैरामीटर भेज सकते हो, कोलन, सिंगल कोट में डी हाइफन हमेशा कैपिटल में रहेगा, डी और वाई हमेशा स्मॉल में रहेगा, वाई। ठीक है, ये फॉर्मेट का टेक्स्ट बताया कि मुझे डेट तो चाहिए फॉर्मेट करके, लेकिन ये फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो अभी आई, यहाँ पे देखो दिसंबर आया था 9, ये उसने खुद से दे दिया। यहाँ पे अपन ने फॉर्मेट भेजा कि भाई ऐसा चाहिए, तो उसने दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैं कितना अलग अलग फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर 3M डाला, 2M की जगह मैंने 3M डाला, तो वो मंथ का नाम प्रिंट करेगा। 2M अगर भेजा तो वो क्या करेगा, नंबर प्रिंट करेगा। अगर 3M भेजा तो देखो नाम प्रिंट किया। 4M भेज के देखते हैं, ठीक है। 4M भेजा मैंने, पूरे मंथ का नाम प्रिंट किया उसने। फिर 4 भेजो, 5 भेजो, कितने भी भेजो, वो पूरे मंथ का नाम ही प्रिंट कर देगा। अच्छा नहीं सॉरी, हाँ लिमिट है, ओके। 4 तक ही भेज सकते हैं। 4 पे भेज, 2 भेजा, 2 बार M भेजा, वो क्या करेगा, नंबर प्रिंट करेगा। 3 बार भेजा, पहले 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। लेकिन 4 भेजा तो वो पूरा मंथ का नाम प्रिंट कर देगा। अंडरस्टूड? लेकिन अभी और एक सिनेरियो है कि तुमको ये हाइफन नहीं चाहिए, स्लैश चाहिए। डेट में अपन नॉर्मली स्लैश भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे हाइफन की जगह स्लैश डाल दो। देखो आया स्लैश के साथ। अब मुझे 24 नहीं दिखाना है, पूरा 2024 दिखाना है, तो क्या करोगे, 4 बार वाई डालोगे। ये वाई 4 बार डालोगे तो वो पूरा ईयर दिखाएगा कंप्लीट। देखो अंडरस्टूड? सो जो फॉर्मेट भेजोगे उस फॉर्मेट में वो डेटा प्रिंट करके बताता है। बट डेट में ये DD MM YY, कैपिटल में रहेगा। बाकी ईयर 2 भेजो या फिर 4 भेजो। अब DD 1 भेज सकते क्या अपन? नहीं ना, नॉर्मली अपनी डेट, अभी देखो मैं यहाँ पे पहले वाले इसमें DD 1 ही भेज के देखते हैं। अब ये आया क्योंकि आज की तारीख 9 है, लेट से अगर 12 है तो ये 1 चले, एक ही डी भेजा तो चलेगा क्या? अभी अपनी डेट क्या है, 9th है, मतलब 1 डिजिट है, तो इसने बराबर 9 प्रिंट किया। लेकिन लेट से आज की डेट अगर 11 रहती तो फिर ये ब्रेक हुआ रहता, इसलिए अपन DD हमेशा 2 भेजते हैं। अंडरस्टूड? समझ रहा है ना सबको? अपने वेरिएबल में पूरी डेट थी, यहाँ पे अपन ने क्या किया, उस डेट में से सिर्फ डेट प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट की, टाइम नहीं, टाइम जोन नहीं, कुछ भी नहीं। अब अपने पास टाइम भी आ रहा है वेरिएबल में, राइट। लेट से मुझे टाइम प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, टाइम भी पाइप है, मतलब डेट पाइप है, सिर्फ उसको अपन पैरामीटर भेजेंगे। टाइम कैसा रहेगा, HH:MM:SS, आवर मिनट सेकंड, ओके। देखो अभी करंट डेट भेजा यहाँ पे, पाइप का सिंबल, डेट ही पाइप है अपना, सिर्फ उसको फॉर्मेट भेजते वक्त HH:MM:SS। लेट्स से देखो आया 8:21, यहाँ पे 24 फॉर्मेट में दिया है, यहाँ पे 8:21 आया। समझे? सो इस डेट, अपने वेरिएबल में पूरा डेटा ये था, उसमें से अपन ने एक्सट्रैक्ट किया और फॉर्मेट करके दिखाया। तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ओरिजिनल चेंज नहीं हुई, उसने सिर्फ यूआई में फॉर्मेट किया डेटा। वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू जैसे की वैसे ही है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि पाइप आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता है क्या? नहीं, वो सिर्फ यूआई में फॉर्मेट कर रहा है डेट, वेरिएबल की वैल्यू जैसी की वैसी ही है। देखो ना, वेरिएबल की वैल्यू यहीं पे ऐसी ही है,
लेकिन यहाँ पे अपन ने जब पाइप यूज किया तो वो डेटा फॉर्मेट करके दिखाता। क्लियर है? डेट मोस्टली यूज पाइप है, ज्यादा से ज्यादा अपन डेट पाइप यूज करते। समझा सबको? लोअर केस अपर केस टाइटल देखा और अपन ने डेट पाइप देखा। अंडरस्टूड गाइस? हाँ ना बोलो कुछ। तो सर यस ये सर। स्टैटिक टाइम ही बताएगा, फॉर एग्जांपल द रियल टाइम चेंज वो नहीं होगा इसमें? वो भी होगा। लेट से नो अपन आई ने मीन कंटिन्यू। ये वेरिएबल किसी इनपुट टाइप टेक्स्ट को बाइंड किया, करके देखते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल मैं यहाँ पे बाइंड कर रहा हूँ नंबर, इसको डेट करता हूँ। यही क्वेश्चन था कि रियल टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, अपडेट होता है कि नहीं? करो। और एक और है। ओके, देखो हमने क्या किया, ये वेरिएबल मैंने डेट को बाइंड कर दिया। अब चेक करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अपनी डेट डेट वेरिएबल में क्या था, दिसंबर 9। लेट से अभी मैंने डेट चेंज किया, 18 करता हूँ। देखो हर जगह आया 18 18, रियल टाइम। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे अपन ने सिर्फ डेट चेंज किया तो उसने बाय डिफॉल्ट टाइम 12 12 ले लिया, 12 बजे का। और यहाँ पे भी उसने टाइम जोन वगैरह कुछ नहीं लाया। ओके, ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं जेसॉन पाइप बता रहा हूँ। अपन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एचटीएमएल में प्रिंट कर सकते हैं क्या? अगर मैंने नहीं। किया तो क्या आता है एचटीएमएल में? दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंटरपोलेशन में ऐसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट, क्या आता है यूआई पे? क्या आता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है ना? देखो आया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बट लेट से मुझे देखना है कि ऑब्जेक्ट में क्या है। तो अपने पास एक जेसॉन पाइप होता है, वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करता है। देखो अब हम देख सकते हैं। गॉट इट? सो अगर लेट से तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को तुमको देखना है, ऐसा होता है कभी कभी कि एपीआई कॉल से बहुत सारा डेटा आ रहा है, वो अपने को देखना है। नॉर्मली हम नेटवर्क टैब में देखते हैं, लेकिन वहां पे कभी कभी दिक्कत जाती है। ये जेसॉन पाइप अपने लिए ऐसी, डेवलपर के लिए अपने को देखना है कि क्या क्या डेटा आ रहा है, तो अपन जेसॉन पाइप यूज करके ऐसा प्रिंट करके देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है। ओके, वैसे ही अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो भी सेम। ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट लिस्ट कोलन एनी अपर इज इक्वल टू एम्प्टी। इसमें ये एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ मैं, ये एक ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी आर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अगर स्टूडेंट लिस्ट को मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया तो ये क्या करेगा, 3 बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाएगा। आया, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट। ये भी अगर देखना है तो जेसन पाइप डाल दो, वो पूरा अरे प्रिंट करके दिखाएगा। आया, उसने पूरा अरे प्रिंट किया। सो जेसन पाइप किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट और अरे को अपने को प्रिंट करना है तो अपन जेसन पाइप यूज करते हैं। क्या करता है वो अल्टीमेटली, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और वो प्रिंट कर देता है। जेसन पाइप। समझा? सर इन टर्म्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अभी हमने 8:26 दिया है इनपुट में, और हमें कंटिन्यूस वो चेंज होना चाहिए, तो होता है एक बार डेट पर, मतलब टाइम पाइप यूज करने के बाद? नहीं, मेरे को नहीं समझा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अब 8:26 स्टैटिक टाइम है, तो एक बार टाइम पाइप यूज करने के बाद कंटिन्यूस मूव होगा या स्टैटिक ही टाइम मिलेगा इनपुट? नहीं नहीं नहीं, वैसा मत पकड़ो ना। वेरिएबल में जो वैल्यू है वो, वेरिएबल की वैल्यू तो आप कैसे कंटिन्यूस। भी चेंज कर सकते हो ना, राइट? अपना पाइप कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल में जो वैल्यू है वो फॉर्मेट करने का अपना पाइप का कंसेप्ट है। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रहे, कैसे भी चेंज हुए, ओके। उससे अपना पाइप का कुछ लेना देना है क्या? ओके। अंडरस्टूड क्या? वेरिएबल की यस वैल्यू यस तो तुम यस। कैसे भी चेंज कर सकते हो, राइट? फॉर लूप लिखो और उसमें टाइम बढ़ाओ, कुछ भी करो। अपने वेरिएबल यस। में जो वैल्यू है उसको फॉर्मेट कर रहा है,
उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है उससे इसको कुछ भी लेना देना नहीं। समझे? ओके, ओके। अंडरस्टूड। हाँ। जिस सो अपने पहले लोअर केस अपर केस देखा, टाइटल देखा, और ये अपने डेट रिलेटेड पाइप सबसे ज्यादा ये यूज होता है, डेट। और जेसॉन पाइप भी, क्योंकि अपने डेवलपमेंट के टाइम पे अपने को जेसॉन पाइप बहुत यूज होता है। उसके बाद आता है स्लाइस पाइप। अब स्लाइस, ये वर्ड कब सुना था अपन ने, स्लाइस? एरे में। राइट, अरे में क्या काम करता है? स्लाइस का यूज क्या है? क्या यूज है स्लाइस का? डुप्लीकेट जो है वो एलिमिनेट करता नहीं नहीं, स्लाइस स्लाइस स्लाइस, SLICE। ब्रेक करते हो। नहीं ना। अरे केक है, केक का स्लाइस मांगते तो क्या क्या बोलते हैं अपन उसको? एक टुकड़ा मल्टीपल तो बोलते हैं इंडेक्स का ना। नहीं, एलिमेंट चाहिए तो स्लाइस यूज ठीक करते है, हैं एरे का। मैंने अगर केक का एग्जांपल दिया, मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि भाई एक स्लाइस दे, तो वो क्या करेगा? पूरे केक में से एक टुकड़ा काटेगा और मेरे को देगा, बराबर। स्लाइस, SLICE, यस सर, नॉर्मल। यस सर, एक समझ टुकड़ा देगा। सकते हैं क्या? टुकड़ा देगा ना वो, केक में से। केक में से कट करेगा और वो एक टुकड़ा अपने को देगा। वैसा ही अरे में से टुकड़ा करके आप टुकड़े करके अपने को अगर डेटा चाहिए तो अपन स्लाइस पाइप यूज करते हैं, वही देख रहे हैं अपन, ठीक है। देखो, जो अपन नॉर्मल डेली टू डेली जो वर्ड यूज करते हैं ना, वही प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। अपने केक के सिनेरियो में जो स्लाइस का मीनिंग था वो भी यही पे, सिर्फ यहाँ पे अपन अरे में से डेटा उठा रहे हैं। ओके। मुंबई। ठीक है, तो मैंने सिटी लिस्ट का अरे बनाया। अब डॉट रो कॉल थ्री पे गया मैं। हाँ। अब इसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू दिखा देते हैं, सिटी लिस्ट पहले। अब ये अपना स्ट्रिंग अरे, तो ये दिखेगा क्या वैल्यू? डायरेक्टली मैंने अरे प्रिंट किया, यहाँ पे अपन अरे प्रिंट किया था तो नहीं दिखा था, यहाँ पे दिखेगा क्या? अरे स्ट्रिंग और नंबर के केस में दिखता है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। राइट, इसलिए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। ओके। ठीक है, तो ये अपना वैल्यू दिख रहा है। अब इसके नीचे भी आर टैग। अब मैं सिटी पाइप यूज करता हूँ, स्लाइस पाइप। सिटी लिस्ट। अब मेरा कौन सा पाइप, स्लाइस। अब देखो मैं स्लाइस पे हॉवर करता हूँ, क्या पैरामीटर है इसको बताओ, कितने पैरामीटर है? स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है। पहला पैरामीटर क्या है, वैल्यू, मतलब ये जो वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू पहले पैरामीटर को जाए। उसके बाद स्टार्ट और एंड, तीन पैरामीटर है, वैल्यू, स्टार्ट और एंड। उसमें से ऑप्शनल कौन सा है? ऑप्शनल एंड। पैरामीटर एंड ना, देखो ना क्वेश्चन मार्क जहां पे है दैट इज ऑप्शनल। ओके। अब अपन क्या करते हैं, सिर्फ पहले स्टार्ट बताते हैं, डायरेक्टली बताते हैं टू। ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अपने पास पुणे, दिल्ली, नागपुर, सोलापुर, मुंबई है, और अपन ने क्या डाला, स्लाइस को टू। तो उसने प्रिंट कहाँ से किया, नागपुर से, मतलब 0 1 उसने रिमूव कर दिया। टू से उसने स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया, दो के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने को कट कट करके दे दिए। क्योंकि अपन ने क्या किया, सिर्फ स्टार्टिंग बताया, तो दो के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सारे दे दिया उसने। ओके। और एक डालते हैं अपन। अपन ने क्या बोला कि स्टार्ट, सो दो छोड़ के, दो से लेकर जितने भी एलिमेंट है उतने भी उसने रिटर्न कर दिए। ओके। अब एंडिंग भी डाल के देखते हैं, स्लाइस विथ स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि भाई यहां से यहां तक दे मुझे डेटा, स्लाइस कोलन, लेट से मैं बोल रहा हूं कि 2 से 5 तक के डेटा दे। तो देखो अभी मुंबई, चंद्रपुर, ठाणे आया। वेट, कुछ तो भी गलत हुआ ना। मैंने क्या बोला, 2 से 5 तक, तो उसने मुंबई से क्यों दिया? मुंबई तो अपना ये ओरिजिनल है, 0 1 2 3 4। यहां से पकड़ा क्या उसने?
रुक जाओ, ऊपर का कमेंट करके देखते हैं। नहीं, मुंबई दे रहा है, मुंबई क्यों दे रहा है ये? 2 से 5। देखते हैं इसको। रिटर्न द, अगर अपन ने सिर्फ स्टार्ट भेजा तो वो क्या करेगा? रिटर्न द आइटम इंडेक्स ऑफ ऑल द आइटम इन द लिस्ट और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। और एंड क्या? रिटर्न ऑल द एलिमेंट अंटिल द एंड। रिटर्न्स ऑल द आइटम बिफोर द एंड। क्या समझ रहा है इससे? गलत बिहेव कर रहा है कुछ तो भी ये। स्टार्ट बताया और एंड बताया। स्टार्ट मुंबई से क्यों उठा रहा है वो? 2 अगर अपन ने बताया। 4 ओवरलोड्स है इसको। ये दिखाता भी नहीं है यार। ओवरलोड क्या है? स्टार्ट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द सबसेट टू रिटर्न। बराबर है, 2 से अपन ने बोला। द एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सबसेट ऑफ द रिटर्न, 5 बोला। तो ये एक्चुअली मुंबई क्या है? 5 है। उसने 5 से स्टार्ट किया है। क्यों 5 से स्टार्ट किया वो नहीं समझ रहा है। 0 1 2 3 4। नहीं, वो भी नहीं जम रहा है। मुंबई से क्यों स्टार्ट किया उसने? एक बार कोलन चाहिए क्या? हाँ सॉरी, कोलन चाहिए था उसको, हाइपन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया था क्या? अच्छा, एग्जांपल नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। सो फॉर्मेट ऐसा भेजते कोलन। तो अभी देखो, उसने बराबर नागपुर से स्टार्ट किया, सोलापुर लिया और मुंबई लिया। अपन ने रेंज बताया कि 2 से 5 तक, तो उसने बराबर 2 से 5 तक अपने को एलिमेंट दिए। तो वो हाइफन नहीं है, कोलन है। ओके, जस्ट अ मिनट। समझा? स्लाइस मतलब एक अरे है, उसमें से पर्टिकुलर स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे डेटा चाहिए, तो अपन ऐसे उठा सकते हैं। क्लियर? समझा गाइस? समझा क्या? यस यस सर। यस सर। ओके। सो पाइप किस लिए यूज होता है? फॉर्मेटिंग के लिए, डेटा फॉर्मेट करने के लिए। ओके, क्लियर है सबको? पाइप। यस सर। यस सर। ओके। सो ये क्या है? डिफॉल्ट पाइप है, जो और भी है लेकिन अपन ज्यादा यूज नहीं करते वो। इतने ही है जो ज्यादा यूज करते हैं। स्लाइस भी बहुत कम यूज होता है। जेसॉन और डेट, डेट सबसे ज्यादा। एक असिंग पाइप है जो अपन यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्जर्वेबल लगता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले ऑब्जर्वेबल क्या है वो समझना जरूरी है। ओके, तभी जाके असिंग। सर सर स्लाइस हमेशा इंटीजर ही लेता है क्या? नहीं, स्ट्रिंग का भी अरे जैसे है। स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, ये इंटीजर ही है। नंबर बता रहे हैं ना अपन, कहाँ से कहाँ हाँ तक, हाँ, तो इंडेक्स। इंटीजर में ही बताना है, पैरामीटर। ओके, जैसे ये दिखाना है यहाँ पे मैंने कि हाँ ए वर्क किया। होगा डेटा टाइप क्या है? 20 से, वैसा कुछ नहीं। नहीं, यहाँ पे देखो ना, डेटा टाइप क्या है? नंबर। नंबर। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। ओके। यस सर। सबसे इजी टॉपिक है पाइप। पाइप अपन क्यों यूज करते हैं? डेटा फॉर्मेटिंग के लिए। पाइप ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता है क्या? तो नहीं। ठीक है। एंगुलर ने कुछ डिफॉल्ट पाइप की प्रोवाइड किए, जैसे लोअर केस, अपर केस, डेट पाइप, जेसॉन पाइप, स्लाइस पाइप, नंबर का भी पाइप है, परसेंट पाइप है, और एक दो है, कंट्री विंट्री वगैरह, डॉलर सिंबल दिखाना है, इंडियन रुपीज दिखाना है, वो भी है। तो बहुत रेयरली यूज होते हैं। उसके बाद अपन अपना कस्टम भी पाइप बना सकते हैं। ओके, तो वो मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा। और असिंग पाइप, 2 ही टॉपिक बचे हैं। कस्टम पाइप कैसे क्रिएट करते हैं और असिंग पाइप, वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है।
सो कल सुबह कनेक्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। और किसी को डाउट है ना तो अंजलि से रीच आउट करते जाओ, ऐसा ना हो कि आप मेरे से नहीं पूछ रहे हो लेकिन अंजलि आपके बैच में ऐड है। कभी भी कुछ भी कितना भी बेसिक डाउट है ना उसको पूछ लिया करो। ओके, मेरे को भी पूछ सकते हो बट आप मेरे तक रीच आउट नहीं होते तो उसको भी पूछ लिया करो। ठीक है, आमिर, अतुल, यू ऑल्सो। नहीं समझ रहा है, कुछ टॉपिक रिवाइज चाहिए, उससे पूछ सकते हो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, कल सुबह कनेक्ट करते फिर, और इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में शेयर करूंगा। चलो, थैंक यू। Same thing we are going to implement it. Okay, because for now APIs are open, but after some days we will add the restriction like only authenticated user will get the access to the API. So if you are not sending the token, you won't get the access. Okay, so you will be needing, you will have to implement this interceptor in your project also. Okay, now if you see this get all user API, if I try to execute it, see what is the error I'm getting? Unauthorized. It's a simple GET API. Let's try this API in opening a new tab also. See, still I'm not able to access. But if we check any another API from another project, let's say real estate, if we click on this get all agent, see, I'm able to get the data. Let's put this over in the new tab also. I'm able to get the data because this API is not protected. This is open API, so everyone can access it. But this API is authenticated. Only if logged in user send the token, whatever the token we get from the login API, only he will be able to access the API. Okay. So for that, whenever we make the API call, in each API call, we can see some headers also. So in that header, we need to send the token. Okay. Fine. So let's start it now. So what I will do, I will create a component for user. User component is already there now. What is there? Okay. Let's create one more component, user app. Let me just first complete the topic, then I will again explain like use cases where we use this. User app, enter. After creating component, we need to create the route. This is old project structure, okay? So you can see app module is there. User app, our component name, the navigation we need to add it. User app, it will go over here, will go over here. Let's just save and check if we are able to access the route. Yeah, okay. Now in this component, we are going to make the API call of that particular API what we said. Okay. So Sir, audio is too low, sir. wait. Now is it better? Now perfect. Yes, Okay. sir. Yes. Okay. So in the component only, if I have to make the API call, what we need to do? Either we can go with constructor or we can create that inject also. So first HTTP object we need to create. So private HTTP HTTP client. Okay, HTTP client object we have created. Then we need to implement on the page load only. We need to make that API call. So on it. And then once we implement the on init, we need to implement our ng onInit function also. Get user API, a function I'm creating. This dot HTTP. Our method is get round bracket. We need to provide our URL. So this is our URL. So this URL will go over here. Then we just need to write that subscribe any. Okay. And whatever the data we get, that we will store it into a variable. Very basic API call we are writing. How much of you are very comfortable in writing? Let's say you are you are in an interview and someone asks you to share the screen and write this piece of code. How many of you are comfortable writing this code without taking any help? Yes, comfortable. Right. See, those who are already working, they might be comfortable. But if you are in the interview phase and you have not worked that much now, so writing this code also now somewhere you might
sometimes might be possible you don't remember this syntax, because most of the time what happens, we copy paste for sub API call code, correct? So try to write it, okay? Don't copy paste API call code, because in machine interview, they will ask you, once the theoretical part is done, they will ask you to share the screen and write the basic API call code also. They just need to see the confidence. Okay, fine. Now whatever the data we get, that we will store it into this variable res.data. Fine. And this is a success call. If any error is inside this API, how do we handle that error handling over here? How can we handle the error? If API call is success, then only our subscribe will execute. If API call failed, so how we handle that? Using catch error. Next compile is Next registered. error. Error, na? So this is Yeah, subscribe next means error. your success. So comma error like this. This will be your error. If anything wrong happen over here, your error block will execute. I will add a debugger over here. So we can use RxJS next error Yeah, that's complete also. that also. Same thing. Okay. Okay. Let's save and check now. So now if we check the component, let's reload. So now our error block should execute. See, it got into error. And if we check the error, our status code is 401, means unauthorized. So this API is authorized and you are trying to access the API without passing the token. So this is unauthorized API call. Okay. Now let me show you the network tab. Let's go to the network tab and see. If you check this header section, in header, there are 4 tabs. Sorry, 3. So general means what is your URL, what is the method type, what response you got from the API, and what is that remote address, means wherever I have hosted this API, it's remote address, IP address. Okay. Then here you can check, we have request header and response header. So request header is like when we make the API call data, we can pass some key value pair data also. See, some data is already there. This is something is browser generated, some is from Angular by default. But just like this, we can send our key value pair data also over here. And the response header is like from API. There are some API where they won't send the data over here in the response. They will send the data in headers also. So from API also, they can send the data back in headers. It's like whenever we do the API call, some part apart from your payload, you can pass the data in header also. In banking application, normally they don't use that payload. Let's say it's a post API. So normally post API, we can see the object over here, payload, but they won't use that. They will send the data in headers also. Again, they will, what do we say, encrypt and everything, whatnot. Okay. So just like the default headers are over here, now we need to send our header. So, but before that, we need to do the login, because once we do the login, then we will get the token. That token we need to send it in the header in token. Okay. So in the same component, I will create just a login form. So this is the login API. Before that, first let's create a user. You also do the same thing whenever you have to do the practice. Create a user and then log in with that user. Let's say user app @gmail.com. Same email ID I'm passing. Okay, this is full name. Okay, and password I'm giving as 334455. Let's create it. Whenever we create a new record, primary key should be 0. Okay, remember that. So our user got created successfully. Okay. Now we have to log in with this user. So let's check the login API. So this is the login API. What we need to pass? Only 2 things, email and the password. So let's create an object for that. Login obj colon any. Okay, just an object I have created. Now this object I need to bind to the template form. So let's create a small form. Label. I'll directly go with text box. Input type text. Plus form control. Placeholder. Username. We need one more column.
That will be for password. Let's make it 33. And one more column will be for button on click of login. Okay. Where it is? Yeah. So see, we have this login form. Now, this is just a practice project, but in your actual application, the same thing you will do into the login component. Okay. Now, so this object we have created. Now this object we need to bind to our form also. Square bracket, round bracket, ng model is equal to login object dot, what is the property? Email ID. We'll go over here. Is name attribute mandatory now? Do we have to add a name attribute also? This? No, Why? Yes, because we required. are not using template. See, Active name form only. attribute is only mandatory in case of ng model if your form is inside the form tag. Do we have form Yes. tag? No. No. So name attribute is not mandatory. Okay. Yes. One more Yeah. thing. Is name attribute mandatory in reactive form? No. because we are using form control Form name. control name. Right? So name attribute has nothing to do with reactive form. Okay. If you are using form tag or no, name attribute is at all not needed in the reactive form. Just with the ng model, it is mandatory if it is inside the form tag. Okay. This is very famous interview question. They will try to confuse you. Okay. So just stick with your point. If you are using ng model inside a form tag, then only name attribute is mandatory on all the places wherever you are using ng model. Okay. Fine. Now on login. Sir, one question I want. Hold your question. Let me just complete this. Our URL. So this part will be common. After that, login. And for post API, how many parameter we need to pass? 2. To URL and the object. So object is nothing but this. So this dot login object, again subscribe. Sorry. Check what kind of data we are getting first. So our email ID was this. Always test the API on the Swagger before you are integrating it. 334455. Login. So see what we are getting in data. We are getting user ID, email ID, and token also. Okay. So this token we will store it into the local storage. In your application also in login page, whatever the data you get, that you will store it in the local storage or SS storage. Okay. Just like that we are going to do. So what is the role of the reference token here? I will explain. That is the next part. Okay. So if result property is true, res dot result is true means API call was success. We found the user. Then local storage dot set item. Can we store directly object into local storage? No. What type of data local storage needs? Key and value. String String value value. only. See End over here. value. Data type is string only. If you want to store object array, you will convert it into string. Yes, JSON dot Like stringify. JSON dot stringify. Okay. Where else we use JSON dot stringify? What is the purpose of this? JSON dot. Where do we use JSON dot stringify again? Converting object into string format. Yeah. While fetching. What are the scenarios where we have to use again it? Forget about Angular. If I ask you JSON dot stringify, what are the scenarios where we use in JavaScript? Just focused on the JavaScript. Where do we use JSON dot stringify? While fetching from API. Yeah, that is one way. Again, To convert object into string. yeah, that's Wherever. same thing. Again, Yes. Sometime when we call the API that sending the data, that No. was that time also. We shall deep copy link that. shop. Yeah, that is this. Deep Yeah. linking or shallow copy, na, we do. There Yes. we use it. Okay. Remember. Now what we need to store? We are just going to store the token. So let's say user
token key name I'm giving, and where we are going to get the token result.data dot see the response result.data dot token. So this token I'm going to use, pass it over here. Okay. And if we get error in else, we will showcase it. Alert. Wrong. Details something. Okay. And once user is successfully login, again, if we have to check, or let it be, we will check first. Let's check if we are able to log in properly or not. Credential is userapp@gmail.com over here, and password is 334455. Let's check the network call. Let's go to application storage, local storage first. I'm clearing everything. On click of login, we didn't call our function. This function we need to call now. On Click. Let's try one more time. Three 4455 login. So now over here you can see login API is there, and it has got the response 200. What do we mean by 200? Successful. Success. Okay. So in response, you can see we got the data, and that we got the token also. This token we have stored over here. See, whatever the token you received, see it's starting with EYJ, and same data we have stored it over here. Now we have got the token. Okay. Now we have to create the interceptor. So login part is done. Now whatever the token we have stored in the local storage, that we need to send in header of the API call. Okay. So let's create the interceptor now. Again, remember this is, yeah. Sir, what? Yeah, Usha, go ahead. Okay, wait for some time. So in service, I will create the interceptor, or we can create a separate folder also as interceptor. Let's open a new terminal. What will be the command to create interceptor? ng interceptor. Generate. Can we write I to create interceptor? No, Why? no, Interface. because its Interface is also stand start for with I, install. na? Right? Interface. Interface also start with I. So that's why we have to provide full. Okay. The door, not the fan, air is coming. Sorry. So this is the command ng generate interceptor, and the name I am giving is custom. Okay. Let's enter. So we have created interceptor. So now interceptor, if you see, this is how your interceptor. This is arrow function. Correct? This is arrow function. But before Angular 16, it used to be a normal service, injectable. But after, up to Angular 15, it was a normal service. Interceptor was a normal service. But from Angular 16, interceptor, guard are arrow function. Okay? Up to Angular 15, guard and interceptor were normal services. But after that, they are converted to normal arrow function. Okay? Fine. Now here we need to create our custom header. Okay. Let me check. I forgot that how we write that. Which project I have it? English form. Let me check. Anyone remember how do we create it? Interceptor. By request.clone. Yeah, request.clone. Inside that, how do we write that? I need that. HTTP params. Okay. Let me just copy. REQ, REQ, REQ. Okay. So here, when you actually integrate your API call,
So when you trigger your API call from over here, so once you trigger API call from over here, and if you have interceptor already installed, integrated, so then it will come over here, and whatever your URL, object, parameter, everything you will get complete URL object over here in the request. Okay. So now over here, what we are doing, first we need to read the local storage data. In our case, in this variable, we are storing user token in local storage. So first we are trying to read the local storage data, and that too, see, whenever like it's based on the API person, what type of data it needs in the token. So in my case, in normal every case, we have to pass the data like this: bearer space, then your token. Just like this, we pass 90%. Whenever we have to pass the token, it will start with like this: bearer space, then your token, whatever the token you get from your login API. But in some case, APM team might think like we don't need to go with bearer, it can be something else, but they will inform you like token what in what key you value pair you need to pass, so they will tell you. Okay. Now whatever the request you got, we are cloning it, and there we are creating new header. So in header object, request dot header set key value pair data. So this is my key authorization, and what is the value I'm passing? Bearer, then whatever the token we will get. Okay. And then this new request, wait, same value is there. So here we can say Sir, complete this request. user token is Yeah, go ahead. sir, here the user token is like what we stored in the local storage. Yes. And this request, can you explain what is this request, sir? Whatever the data you get from your component, whole data, you will get it over here according to the API. Your URL, what object you are passing, everything with API. The, re- the response which we are getting from the No, API, no, you mean that? whatever you see, once this line execute, it will go over here. This is response or this is request. We are making a request to the API call, na? Yes, sir. So whatever the data, whatever the URL, if you are sending some parameter, if you are passing some object, everything, you will get it over here. Complete URL data. Oh, okay. Understood now? Got it. And Yes, sir. whatever the request you get, you are cloning that and you are modifying it. Okay. And while modifying, you are adding new header into that with key value pair. Key name will be authorization, and value what you are passing, bearer space, whatever the token you have stored. Okay. Let's add a debugger. Just like this authorization, you can pass so many headers also. Let's add a debugger. So, along with our request, we are attaching the header also. Header. Is it that? See, I told you, na, here we have some different, already some headers are there in header. See, these are existing Yes. header. Just like that, new header we are passing, where key name will be authorization and value will be bearer space, whatever the token we get from the login API. Got it? Yes, sir. Yes, understood. Okay. Now, once you create the interceptor, na, it won't be, it won't execute. You need to add this interceptor in your app module. In new project, you will add it in the, where you will add it? In app config, in the provider section. So over here, provide HTTP client is there, na? So over here, interceptor. Wait, I think no. Provide. Same thing, you will do it in the new folder structure also. Provide. Interceptor is not coming. Interceptor with interceptor. Okay. And you will be passing your interceptor function name. See what it needs? Interceptor function name. So our interceptor function name is custom interceptor. So this you need to pass it over here. Okay, that too in array. Wait, why it's not suggesting? Do we need to pass it inside this? Yeah. Okay. So provide HTTP client is there. So inside that, like we are using HTTP client, but with interceptor. And what is the interceptor name? This. It's like enabling interceptor. It's not sufficient that you created the interceptor. You need to enable this interceptor also. Okay. So whenever you are making the use of HTTP client,
we are allowing like this interceptor you need to use. So now all the API call will go through over here. So once you create the interceptor, next thing in your app module or in your app config in the provider section, you need to add like this. Okay. Now let's check. Once you save, so see, wait, let me add the debugger proper. Now here also I'm adding a debugger on 36 line. Okay. So see, once I reload, this function is there. Once code execute from over here, it will go over here, interceptor. And if you check the request, as I said, everything, see, you got the URL. If it is any parameter with credential, method, params, header, context, everything means complete you API object. You get it over here in the request. Means complete request of the URL. Okay. Now we are just modifying the headers out of that. Okay. So see, header, we got the token. So see how token got look, bearer space, whatever the token we received from the API call. And we are passing the new request. But why we are getting token got expired or what? Let's try to log in again. I think 5 minutes or 10 minutes might be there. Let's log in again. 334455. On click of login. Yeah, API call is there. Token also we got. Let's reload one more time. See, now API call is success. We didn't add the debugger, I think, in success. Let me reload again. See, now we got the response. Okay. But if we delete or let's try to change the token. See, I'm modifying something over here. Okay. Now if I refresh again, now my total is corrupted. I will go to the error block because token is not valid. Let's try login again. 334455. On click of login, we are getting the correct token and that token we are storing. If I refresh again, now I am sending the correct token. So I will get the response. Understood? Everyone? Yes, sir. Yes. Okay. So the basic use of interceptor is we can provide a custom headers. Normally use it. We use it for sending the token along with the API. Very basic use. Again, there are so many uses also of the interceptor. We will see that in the topic, in the project. Let's say When we call the API, that time the interceptor will hit, right? Every time. every time, whatever the API call you are doing now, all the API call will go throughout this. Because of we are We have enabled the interceptor, implementing. na? So Oh, all the API call will go that's through really this. good. Either you are writing the API call in service or in directly component. After that, it will come over here. From here, API call will go. So interceptor sits between your Angular application and your server side. All the incoming Okay, requests will go from over here, outgoing. okay. When first time when we put the ID and password, that time also. Yeah, that time also. See, all the API call, no? Doesn't matter if it is login or something. See, it came over here. Login. See, body. Understood? Hmm. Okay. But login APIs are anonymous. Without passing the token also, you will be getting the response. Because I said Oh, it open, anonymous. But this API is authenticated. So if you need to access this, you need to pass the data. Understood? okay, understood. Anyone having a question? Yeah, Sir, which scenario we have to use like interceptor, like when using calling the login API that time or what any other scenario Login we have to API, use. even if you send the token, it doesn't need the token. Login API is anonymous. Without sending the token also, you will be able to access. Okay. So here you can add the logic, like if it is login API, if you get the URL, right? So here you can add the check, like if it is login API, you don't reclone this. Apart from login API, for all the API call, it will reclone. Got it?
If an else Only check, if login an scenario you have to use that one or any other scenario. token, no, you didn't understand. See, if our project APIs are authenticated now, so whatever the API call you are making, you need to send the token. Okay. How do you get the token? From your login API. Once you do the login, in response, you get the token. That token we normally store into our local storage or session storage. And after that, whatever the API call you make, our interceptor will execute from our local storage. We are reading the token, and that token we are sending it in the headers so that we will get the API response. Understood now? Yeah. Sir, even for put and like a post method Every also. see, are we writing over anything over here? Get, post, put, delete. No, nothing we are All the writing. API call, it can be get, post, anything it can be. All the API call will go from over here only. See, if I comment this now, I have comment. Okay, now it won't because by default it needs the return. If we comment it, API call should not happen, but this function needs the return. Okay. So all your API call, doesn't matter the method, all your API call will go finally from over here. Clear? Okay, previously it used to go without this header. Now this header is getting added to Right. whatever API post. Right. Okay. Sir, Yes. doubt is like, so this when we use interceptor, whatever request we make from client side, so from the HTTP, I mean from the service, it go to the interceptor, right? From here, actually, it is initiating the API call. From interceptor only, we are initiating the service call. Right. No. See, either you write the API call in component or you write the API call in service. Either here. Actually, your API call from your Angular application will initiate from over here. Okay. First. No, sir. For example, see, we have a service file, right? So here we are making a HTTP call, right? Right. So from here here also it it is go to going the interceptor. From here also it is going to go to the interceptor. Yeah. As I said, na, so doesn't matter. Either you are writing your API call function in your component or service. It is going to finally come over here. Okay. So and whenever we are getting the response from the database, I mean, sorry, from the backend, that time the request directly comes to interceptor, right? Yeah, that also. That is, see, this is like custom interceptor we have created to send the token. Again, once you get the request, now you can catch that over here. Here also you can write the subscribe. So whatever the API call data you are getting, you can subscribe in the interceptor. We will see that in that we normally do it for handling the error interceptor, And we call it. what is this next method actually doing? It's triggering the function API call. It's like emitting, actually triggering this API call. Is it observable? Yeah. That's why whenever we get the response, it send it back to the wherever you have called the API call. See the data type observable. Okay. Sir, what happens when we don't use interceptor? Nothing. Normally your API call will be there. What If you are the need to pass, disadvantages of not using interceptor? see, if you don't want to use the interceptor and still you want to pass the header, so over here you will pass the header. See, get. What parameters we have to the get function? URL, header, contact. Right? Yes. We can pass the header over here also. But let's say you have 50 API call. So is it good that 50 times you will create header over here, like constant header, and everywhere you are sending that token? So instead of writing it at the 50 functions, it's better to write it in a one place, no? Understood? Same header, whatever we are creating over here now, that you can create over here also before making the API call. Like this. Any other disadvantages? It's not a disadvantage, no? No, not using interceptor. No, there is no another way. In every function, you need to pass the custom header like this. Everywhere, wherever you are making the API call, here you will create the header and you will pass it along the request.
But to do it in a single place, we use interceptor. Okay. Okay. And error interceptor. Once we get the response also, we can get the response over here also. Let's say validation message, whatever the error you are getting. In a single place, you can do that by using error interceptor. We will create one more interceptor where we handle the response. This is like whenever we are sending the data, we are modifying the request. Once we get the response, we can catch that also. And if we get any error, we show that over in that other interceptor. We can create many interceptors. Or over here also we can write the same code. But for error interceptor, we created separate file. Okay. That's why we have Sir, it over here. We can pass multiple arrays there. sir, what are the different scenarios we use interceptors? First to send the token, then error handling, then we have something mocking. Okay, mocking I will explain in project. Okay, instead of making the actual API call, we will read some JSON file and we will return that data. Mocking. Anyone have used mocking? Mock file, mocking. Mock JSON data. Yeah, mock JSON data. You have to load the server with that mock JSON, right? Like Yeah, JSON like server, use the JSON JSON server server. or Express.js, something like that. Yeah, Or we can read Express.js. the asset file also. In asset folder also we can store JSON file now. That also we can read. Yeah, that we have to pass in the JSON file URL. server. Yes. Okay. Understood? But most famous use is to send the header, to send the token, and error handling. Understood, So, sir, everyone? what is mainly its flow from component to interceptor, from interceptor to backend, then Again interceptor, then your component. From component, it will go to interceptor. Then it will go to backend. Once we get the response, again it will come to the interceptor. Then it will go to the from wherever you are initiating the API call. okay, thank you. Clear, everyone? Yes. Okay, just so let's take a break. Then we will connect for project. So it's 10 to 9:20. So 9:30 we will connect again. Okay, you can also have your dinner. Let's connect back again.